हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता's academic voyage। इसमें मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो बताऊंगी। नो एक्स्ट्रा ज्ञान, नथिंग। ठीक है, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगी और उसमें मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताऊंगी जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो माय पैटर्न एंड देन यू हैव टू गो इनटू योर एग्जाम एंड देन यू हैव टू राइट इट। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुके हैं एंड यू हैव योर एग्जाम on 28th. So 28th से start होगा. So let's get started without further delay. I'll just tell you what are the topics that I'm going to cover in this particular video. Okay. As you can see my screen, right? So in short notes, what are we going to cover today is unit 1. ठीक है, unit 1 के हम इस 4 questions को करेंगे, 5 questions को. One is concurrent status of education, right to act 2009, policies, acts and provisions, fundamental rights and DPSP related to education status and programs. ठीक है, unit 1 में हम ये topic करेंगे. Unit 2 is going to be your POA, Program of Action 1992, NPE 1986, Ramamurthi 1990, Secondary Education Commission, NCF 2005, WARDHA Education Scheme, Woods Dispatch of 1854, Surgeon Report 1994. Okay, and unit 3 mein we are going to cover 3 topics only. Next part mein we will cover unit 3 and unit 4 holistically. One is vocationalization, second is universalization of elementary education, and third one is 3 language formula. That's it. Let's get to the answer. See, ये सारे के सारे आंसर्स मैंने खुद बनाए हैं. ओके, एंड दिस आंसर इज गोइंग टू बी हैंड रिटन, जिसमें कि आपको सिर्फ ये फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो विथ योर एग्जाम, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है एंड यू कैन ऑलरेडी सी दिस. ठीक है, मैं समझाने का काम नहीं करूंगी बिकॉज आई फील दैट कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है. I'm just going to dictate the answers for you ताकि आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो. Okay, let's get started with the one number, concurrent status of education. Okay, so in concurrent status of education what we're going to see is, पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है concurrent status of education and then you are going to write about concurrent status of education. So the concurrent status of education in India as enshrined in the constitution reflects the intricate balance of legislative powers between central and state government. This allocation of authority over education to both levels of governance implies an exact approach to policy making and implementation. Provisions of education placed in concurrent list of Indian education. So what are the provisions of educations that are placed in concurrent list of Indian education? First is shared authority to the recognition of the diverse educational needs prevalent across different states in the country. Number 2 is flexibility. So flexibility in addressing diverse educational needs across the states while ensuring a national framework. Number 3 is cooperation between central and state authorities for effective policy implementation and development. Okay, so these are provisions related to educations which are placed in concurrent list of Indian educations. So what are those? First is shared authority, next is flexibility, and third is cooperation. Next is implications of educations being on the list. So what are the implications of educations being on the list? First is policy variation, second is coordination challenges, and third is national unity. So these are some implications of educations being on the list. What you will write later? The another, because it's short question, तो इसमें आपको बहुत ही short लिखना है क्योंकि आपको 1.5 पेज में complete करना है. Because you are going to get 4 questions, so 4 questions में आप अगर divide multiply करो, so it would be like 2 questions 3 pages and 2 questions 3 pages, 3 6 pages. Next topic you are going to write educations on concurrent list. What are the educations on concurrent list? First is improvement in standards of educations. Second, educations for emotional integration. Third one is for creating equalitarian society, because we are aiming for equalitarian society. Number 4 is quality leadership from central government and for better discipline. So these are a few short
points for education and concurrent list. Then later at the end, you are going to conclude your answer with the conclusion part. So what are you going to write in the conclusion? In conclusion, concurrent status of education in India placed with concurrent list of the constitutions. As we know that we have three lists. One is central list, second is a state list, and third one is concurrent list. जिसमें कि हमने देखा कि concurrent list में क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास एजुकेशन से रिलेटेड परमिशन है. The provisions allow for shared authorities, flexibility and cooperation, emphasizing the importance of tailoring educational policies. Tailoring is like particular person या location या local person के लिए उनके हिसाब से बनाया गया हो to local needs while maintaining a national foundations. You are also maintaining national foundations and you are aiming for providing education policies to local people also. Understanding the grasp of the concurrent status. जब आप grasp of concurrent status को समझते हो, what are the grip of concurrent status? It becomes supreme for informed policy making and effective implementations. So it becomes paramount for informed policy making and effective implementation. This is all about concurrent status. If you want to see, I can show you. I'm giving you 1 minute of time so that you can scan the answer. Done? Okay. I have added one more point heading with the concurrent status, priorities of educational development in India and concurrent status of educations. Because ये आपको long question में भी आ सकता है, short में भी आ सकता है. So you can also write about priorities of educational development in India. I have written in short form. आपको exam में ऐसे नहीं लिखना है. You have to write educational, okay, educational development in India and concurrent status of education. First is equitable access and inclusion. आपको equitable access और inclusion मिल रही है. Curriculum development and standardization. Curriculum development बनाना और standardized भी में. Okay. Third is teacher training and professional development. Fourth is technological integration. You are integrating technology also in your education policies. Fifth is assessment reforms. आप जब assessment करते हो तो assessment में reforms लाना. Number 6 is vocational education and skill development. Very easy. Your priorities of educational development. That's it for concurrent status of education. Now let's come to the next topic. That is policies, acts, provisions related to education. थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, but why I'm making this ताकि आपको एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले भी अगर आप वीडियोस देखोगे आपको इजी होगा क्योंकि ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं. Policies, acts, provisions related to education. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, what you are going to write is education in India is not just a societal necessity, but it's also a constitutional imperative. Okay, you are not just focusing on society and societal needs, but also constitutional imperatives, which is enshrined in various provisions, acts, and policies of the Indian constitutions related to education. So, what are those? So, constitutional provisions related to educations are. First is minorities. In minorities, you know about Article 29 and 30. Short answer है. तो इतने लंबे में लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऐसा भी लिख दोगे कि Article 29 and 30 talks about minorities, then also examiner will understand आपको आता है. Number 2, Article 45, DPSP, Part 4 में enshrined है. Okay, free and compulsory education for children up to age 14 years. Okay, up to age of 14 years. Number 3 is Article 21A. So in Article 21A, we know. Wait a minute. Article 21A, right to education. At 86 Constitutional Amendment Act 2002, it has introduced Article 21A as a fundamental right for all children 6 to 14 years age. Okay. The next topic is acts, policies related to education.
So what are the acts, policies related to education? First one, you can write about RTE Act, Right to Education Act 2009, which talks about right of children to free and compulsory educations, which is enshrined in Right to Act 2009. Now, NPE, these you can write in acts and policies related to education. So these are some acts: National Policy of Education, National Policy of Education or New Economic Policy. 1986 aim to develop education and equality of SC/ST people, means scheduled caste and scheduled tribe people with non-scheduled caste and scheduled tribe groups. Okay. NEP 2020 ये क्या चीज की बात करती है? Aim to transform education system in India and focus on holistic approach. Easy point है. Next is SSA, Sarv Shiksha Abhiyan 2001 to 2002. It is like, what is this talking about? Universalize elementary education. You have to universalize primary education, increases enrollment in schools, and also retention rates in primary schools. So यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के through universalization of elementary education, they are going to provide elementary educations to all and increases the enrollment rate. Also, retention rates in primary schools increased. Next is RMSA 2009, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. It is aimed to provide access to quality educations at secondary level. So RMSA is for Madhyamik Shiksha Abhiyan. So it is for secondary level educations, quality educations at secondary level. It aligns with a broader goal of creating a seamless and integrated educational systems. That's it. And then you are going to conclude your point, because आपको 1.5 pages में आपके answers लिखने हैं. What are you going to write in conclusion? In conclusion, education in India is not just a legal obligations, but a constitutional commitment. ये same आपके introduction में लिखा हुआ था. You just changed few words. Legal obligation, but it is not just a legal obligation, but also a constitutional commitment. The interchange of constitutional provisions, acts, and policies shapes educational landscape. You are aiming for inclusivity. सबको include करना है, quality देना है, accessibility देना है. So, aiming for inclusivity, quality, and accessibility. As the nation progresses, जैसे the nation progress करती है, a robust and adaptive educational system remains pivotal, guided by the principles enshrined in the Constitution of India. This is all about this topic: acts, policies, and provisions. I'm going to show you the answer for a few seconds. Pause the video and try to read the answer of yourself. This is going to help you to retain answers, right? Let's come to the next question. Right to Education Act 2009. ठीक है? So Right to Education Act 2009 में आप क्या लिखोगे? RTE Act is a historic legislation. ये एक historic legislation है इंडिया में that aims to provide free and compulsory educations for all children in age group of 6 to 14 years. Enacted on the 1st April 2010. So कब ये enact हुआ था? 1st April 2010 को. This step was significant towards universalization of elementary education, that is UEE. So Right to Education Act 2009 का step क्या था? This step was significant towards universalization of elementary education and reducing the barriers that hindered, or that as a kind of barrier, hindered access to education for a substantial segment of the population. Okay. So what are you going to write in the introduction? The Right to Education Act 2009 is a historic legislation in India that aims to provide free and compulsory education for all children in age group of 6 to 14 years. Enacted on 1st April 2010, this step was significant towards universalization of elementary education, UEE,
and eliminating barriers that hindered access to education for a substantial segment of the population. Barrier मतलब कि hurdles जो आपको रुकावट ला रही है, that hindered access जो आपके access को रोक दे रहा है, ठीक है, hindered access to education for a substantial segment of the population. Now आप principle लिखोगे in every question. If you will write the principle, that would make your answers very enriched. Okay, so Principles of Right to Education Act 2009. In this, you could write that it ensures every child's right to education without discrimination. So you are ensuring every child's right. So you are ensuring about every child's rights to education without discriminations. ये principle है. Next is provides equitable access to quality education for all children. You are providing equitable access and quality educations for all children. It integrates children from all backgrounds and abilities into mainstream educations. So no matter कौन से background से बच्चा है, then also they are going to integrate the children from all the backgrounds into mainstream education. जो mainstream education है उसमें भी include किया जाएगा. Number 4 is establishes accountability mechanisms for act implementation at various levels. So you are establishing accountability mechanisms. You are taking account. You are accountable for your act and implementations at various levels. So this is the principles of RTE Act 2009. Ensures every child's right without discrimination, provides equitable access quality education for all, integrate children from all backgrounds into mainstream education, accountability mechanisms for act implementation at various levels. Next is features of RTE 2009. What are the features of RTE 2009? क्या features है, characteristics है, both are same, features or characteristics. Ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Almost similar answer. Prohibits schools from denying admissions. Schools को prohibit किया जाता है कि आप किसी भी students के admission को deny नहीं कर सकते हो. So schools are prohibited from denying admissions. It mandates specific norms for school infrastructure, teacher-student ratio, and teacher qualifications. So mandatory for specific norms. So there could be some criteria for school infrastructure, teacher-student ratio, and teacher qualification. Establishes SMCS. SMCS is School Management Committee established की जाती है. Number 5 is requires private schools to reserve 25% of seats for children from economically weaker sections. EWC के category में जितने आते हैं, that also get 10% of reservation, and disadvantaged groups. Okay, so these people requires private schools to reserve 25% of seats for these kinds of children related to EWS and disadvantaged groups. So private schools को 25% reservation देना पड़ेगा. Okay. Now in conclusion में क्या लिखोगे कि in conclusion RTE Act 2009 is landmark law ensuring that all children aged 6 to 14 years get free and compulsory education, and it promotes inclusivity, quality, and accountability in schools by involving communities. You are involving communities also and setting standards. Community भी involve करवा रहे हो और standard भी set कर रहे हो कि this is our standard, ठीक है, इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं. And it aims to provide equitable learning opportunities for all. So आप एक equitable learning opportunity provide कर रहे हो for every students, for all. This act is a key to building a more educated society, ठीक है. तो ये जो RTE Act 2009 है, इसका एम क्या हो रहा है कि ये एक it is a kind of a key which is going to build a more educated society. आप जितना ज्यादा schools बनाओगे और provide करोगे students को, student teacher का ratio अच्छा होगा, teachers की qualifications अच्छी होंगी, तो हमारी society क्या होगी, बहुत ज्यादा educated होगी. Let me show you the answer for few seconds so that you can pause the answer and then you can read the answer. Then next topic is fundamental right part 3. Fundamental right part 3 में क्या बोल रहे हैं कि fundamental rights जो है are a set of rights guaranteed by the Indian constitutions. ये Indian constitution guarantee देती है fundamental rights को. It is a set of rights. Okay, it protects individuals' freedom and ensures equality and justice for all citizens. So ये क्या protect करती है, individual freedom protect करती है. किसी भी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम्स है वो आपकी प्रोटेक्ट की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा दैट यू आर गेटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स जो है
वो कौन से पार्ट में इंश्राइंड है? इट इज इंश्राइंड इन पार्ट 3। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 12 to 35। इंट्रोडक्शन में कुछ तो लिखोगे ना। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स को? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट इज इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स, ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन ड्राफ्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। इट इंश्योर्स सिविल लिबर्टीज फॉर ऑल सिटीजन्स। ये सिविल लिबर्टीज इंश्योर करती है फॉर ऑल सिटीजन्स। एंड फिफ्थ इज इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज जस्टिसिएबल। ठीक है, ये जस्टिसिएबल है। व्हाट काइंड ऑफ नेचर फंडामेंटल राइट्स है? जस्टिसिएबल इन नेचर। और जस्टिसिएबल इन नेचर का मीनिंग हो गया इट इज इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन में आप इतना सा लिख सकते हो। देन आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो यू कैन नॉट राइट ऑल द 12 to 35 आर्टिकल्स इन योर क्वेश्चन पेपर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर 4 मार्क्स का होगा। देन एड आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई is mentioned in article 21A। 21A में इंसर्ट किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, गारंटीड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 years। This is about article 21A, right to education। Number 2 is equality, article 14। So equality, article 14 talks about it ensures equality before the law and equal protection of law, okay, in educational opportunities। आप ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा आर्टिकल, it doesn't matter, remember, and then you can write accordingly। So it ensures equality before law and equal protection in educational opportunities। Number 3 is prohibition of discrimination, article 15। So it prohibits discrimination based on what? Religion, race, caste, sex, or place of birth in education institutions। तो क्या यहाँ पर religion, race, caste, sex, place of birth, 1 2 3 4 5, okay। So based on religion, race, caste, sex or place of birth in education or institutions। Now it prevents educational institutions from discriminatory practices। और ये education institutions को भी prevent करती है from discriminatory practices। Another article is abolition of untouchability। You can also write about it, article 17। It abolishes untouchability and forbids its practice in any form। It ensures all students regardless of background, कोई भी background का student हो, they are going to get the education on equal basis, equal access to education institutions। So this is about abolition of untouchability। Article 29 and 30 talks about minorities education। So cultural and educational rights provide करती है article 29 and article 30 rights of minorities to establish and administer education institutions। So right of minorities to establish and administer education institutions and article 29 cultural and educational rights। Done। This is very easy। These points okay, आप थोड़ा सा conclusion डाल दोगे। These points encapsulates the significant aspects of fundamental rights related to education, emphasizing their justiciability, constitutional origin, importance, and specific relevance to ensuring equitable and inclusive education in India। This is all about fundamental rights। Take pause and then read about it of your own। This is about right to fundamental rights। कितने सारे आर्टिकल्स हो गए आपके? 21A, 14, 15, 17, then 29 and 30। बहुत सारे हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स में इतना काफी है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। किस में इंश्राइन है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कम्स फ्रॉम 35 to 51। ठीक है, इसमें इतने आर्टिकल्स होते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हो, मैंने इसमें नहीं लिखा है। DPSP और गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और प्रिंसिपल्स गिवन टू द फेडरल इंस्टीट्यूट्स governing whom? State of India। So DPSP are guidelines or principles given to the federal institutes governing the state of India। So DPSP state को govern करने का काम करती है। These principles are fundamental in governance। ये principle क्या है? fundamental है, basic है in governance of the country। country के governance के लिए ये basic है principles DPSP के। aim क्या है इसका? To create social and economic conditions। अब देखो यहाँ पे DPSP सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करती है एंड मैंने फंडामेंटल राइट्स में नहीं बताया आपको, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है।
So fundamental rights talks about political democracy and DPSP talks about socio-economic democracy. Okay. If you would get any questions related to DPSP or fundamental rights में any kind of differentiation, तो आप इन सारे points को differentiate करके लिख सकते हो. DPSP done this introduction part. Now come to the another topic. DPSP are taken from where? Irish constitution. So Irish से लिया गया है DPSP को, which was itself influenced by Spanish constitutions. तो DPSP कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में. और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. आर्टिकल जो है ये 35 to 51 के अंदर है और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है DPSP. नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ DPSP. So what are the main purpose of DPSP? To establish social and economic democracy. Same provides a framework for creating a just society. So you are providing framework for creating a just society, just and fair society. To guide the legislative and executive branches of the state. तो ये गाइड करता है, किसको गाइड करता है? स्टेट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को गाइड करने का काम करती है DPSP. ये मेन पर्पस है DPSP का. और दो पर्पस है that DPSP are not justiciable. जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स justiciable है, you can it is enforceable by the court of law, fundamental rights, but DPSPs are not enforceable by the court of law. It is not justiciable as they are fundamental in governance and policy making process. Okay, so DPSP are fundamental in governance and policy making process. Same line वहाँ पे भी था, उसको अलग तरीके से लिखा गया. And then you are also including it in the main purpose. It ensures that state shall strive to promote welfare of the people. Directive principle of state policy welfare of the people के बारे में बात करती है. So it provides that it ensure करती है the state shall strive to promote welfare of the people by securing and protecting a social. Okay. Next is the articles related to education. Article 45, Article 41, Article 46 and Article 47. तो आप 41, 45, 46, 47 लिख सकते हो. 45 is about promotion of education. So education को promote करने की बात की जा रही है Article 45 में. The state shall endeavor to provide early childhood care. आप 45 में early childhood care के बारे में बात करते हो. कौन provide कर रहा है? State shall endeavor to provide. And education. ठीक है, early childhood care plus education for children, all children until the complete age of 6 years. जब तक वो 6 years का एज कंप्लीट ना कर ले तब तक इनको चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 कौन प्रोवाइड कर रही है? स्टेट इंश्योर कर रही है ये चीज प्रोवाइड करने का. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 41 एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक नीड्स. सो सी हाउ एम आई राइटिंग दिस आंसर. मैंने आर्टिकल 45 लिखा, फिर मैंने लिखा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. आर्टिकल 41 एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक नीड्स. आपको एजुकेशन मिल रहा है फॉर इकोनॉमिक नीड्स. डायरेक्ट द स्टेट, स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. आप स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हो आर्टिकल 41 के थ्रू दैट यू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू वर्क टुवर्ड्स इकोनॉमिक नीड्स. अगर किसी को इकोनॉमिक नीड्स चाहिए देन यू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू दैट वर्क एंड दे कैन वर्क टुवर्ड्स द इकोनॉमिक नीड्स एंड सोशल सिक्योरिटी. उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा जब वो अर्न करेंगे. सो यू आर गेटिंग एजुकेशन फॉर योर इकोनॉमिक नीड्स. हम पढ़ाई करते हैं एंड देन वी डू जॉब. फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग बीएड एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अ जॉब with the help of this education. आर्टिकल 46 क्या बात करते हैं? यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम. तो आपने आर्टिकल 46 लिखा, फिर यहाँ पे ऐसे हेडिंग देकर के लिख दिया यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम. आर्टिकल 46 सबको इक्वल यूनिफॉर्म बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है. एजुकेशन सिस्टम जो है सबके लिए यूनिफॉर्म है. इट प्रमोट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. यहाँ पे एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है 46 में, क्योंकि ये इन यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है. किसके लिए? एससीज के लिए, एसटीज के लिए. एससीज इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. आर्टिकल 47 क्या बात करता है? रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. यू आर टॉकिंग अबाउट रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. आप न्यूट्रिशन लेवल को रेज करने की बात कर रहे हो एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सही करना, न्यूट्रिशन लेवल को राइज करना. हम देखते हैं ना कि whenever we talk about midday meal scheme program, right? So midday meal scheme में क्या होता है? They ensure कि जो छोटे बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड हो उनके थ्रू. ओके, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन आल्सो लेवल जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उनका इंश्योर हो और पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हो. ओके, नेक्स्ट इज
And later you can write in the conclusion that as DPSP guides the state to provide early childhood care, promote education for weaker sections, and use education to improve economic and social conditions, as its aim is to create an inclusive and equitable educational environment. So DPSP का aim क्या है? ये create करती है inclusive or equitable educational environment. So you can write this thing in your conclusion part of DPSP. Let me show it to you so that you can read it. Pause it and read it. Hope you have done. So we have done with unit 1. Unit 1 में हमने 4-5 topics कर लिए हैं. That is related to fundamental rights, DPSP, and concurrent status of education, policies, acts, and provisions, RTA Act 2009. Let's come to unit number 2. Unit number 2 में पहले हम WARDHA education scheme करेंगे. So WARDHA education scheme में आप क्या लिखोगे? First you have to write introduction, short introduction. WARDHA education scheme was proposed by Mahatma Gandhi in the year 1937. It was introduced at the WARDHA conference, and the purpose of this WARDHA education scheme is, now just write a short introduction and then write the purpose of WARDHA education schemes. In purpose, we can write overall, the education scheme is colonial rule, colonial India, okay? And it integrate vocational training with academic learning. So you can write the purpose of WARDHA scheme with this 2 short line. And then you can write about objectives. So what are the objectives of WARDHA scheme? Basic craft-centric education, mother tongue as the medium of instruction, and holistic development of children. अगर आपको ऐसा लगे कि you are not getting answers, तो थोड़ा समझ लो, and then you can write anything on your own language, वो भी चलेगा. What are the legacy of WARDHA scheme? It influenced contemporary education reforms in India. Legacy क्या थी कि इसने influence किया contemporary education reforms को India में, and it emphasized self-reliance and practical skills in education. Almost like we are talking about vocational training and then self-reliance and practical skills in education. So these are legacy. What are the implementation of WARDHA scheme? Emphasized manual productive work. So people used to work manually and focused on community involvement and social responsibility. So in WARDHA scheme of education, they focused on community involvement. Community used to come together and they used to involve, and social responsibility also. Now, next you have to write impact of this scheme on contemporary educations. Right now, what is the impact of WARDHA scheme on contemporary educations? First, you can write about vocational integrations, because vocational kind of education also integrated in our education system. First is blend skills with academics. So with academics also, we get vocational education, for example, BCA, BBA, etc. Prepared for workforce, practical learning approach. So emphasizing on practical learning instead of theory. Okay. Next is mother tongue instructions. So what are the mother tongue instruction? Teach in native language. Okay. So mother tongue instructions में क्या है कि आप अपने native language में पढ़ा रहे हो, preserve कर रहे हो cultural identity को, enhance कर रहे हो learning outcomes को. So these are mother tongue instructions. And next is holistic development. You are talking about like overall development. Develop whole child, emotionally, social skills, each and everything. हर चीज को देखना है. तो holistic development में क्या हो रहा है? आप develop कर रहे हो पूरे मतलब child के overall development पे comprehensive educational approach लगा रहे हो. Community involvement हो रही है. So engage with local communities. आप local communities को engage कर रहे हो. Collaborations for local needs. आप local needs के collaboration पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. So community involvement means you are involving the community. Access to education. So you are providing access to education for pre and compulsory education. You are providing improving education access to the child, and self-reliance and practical skills में आप दे सकते हो. Foster self-sufficiency. Real world competency is emphasized. However, its principles continues to influence educational reforms in India. So इसके जो principles है वो continue हो गए to influence the educational reforms in India. So these are the few basic things that you can write in WARDHA scheme. Not too much. Let me read it again for you. The scheme was proposed by Mahatma Gandhi in 1937 and introduced at the WARDHA conference.
Purpose is overhaul the education system in colonial India, integrate vocational training and academic learning. Objective is the basic craft-centric education, mother tongue as the medium of instructions, holistic development of children. Legacy, influence contemporary education reforms in India, emphasized self-reliance and practical skills in education. Implementation emphasized manual productive work, focused on community involvement and social responsibility. Impact on this scheme on contemporary education, vocational training, blend with skills with academics, prepare for workforce, practical learning approach, mother tongue instruction, teach in native language, preserve cultural identity, enhance learning outcomes, holistic development, develop whole child, and then emotional and social skills. You can also write provides emotional and social skills, comprehensive education approach, community involvement, engage with local communities, and collaboration for local needs. Access to education, free and compulsory education, improve education access. 6 is self-reliance and practical skills, foster self-sufficiency, real-world competencies emphasized. However, its principles continues to influence education reforms in India. Next is Wood's Dispatch of 1854. Wood's Dispatch of 1854 was presented in 1854, already written here. Remember the date, during British rule in India. Was initiated by Sir Charles Wood. So Sir Charles Wood ने इसे initiate किया था. He was the president of the Board of Control of British East India Company. What is the purpose of Wood's Dispatch of 1854? To formulate a comprehensive plan for education in India, to establish a structured educational system. So you're just emphasizing on structured educational system and formulating a comprehensive plan for education in India. What are the objectives of Wood's Dispatch? To promote English education, to lay groundwork for universal development. Impact on contemporary education. What are the impact on contemporary education? First is English education emphasis, promotes English proficiency, global connectivity facilitator, like globally you are connecting with other people, because in contemporary India, we are seeing the emphasis of globalization, and it promotes English proficiency, widely used medium. Okay, so whatever the medium we are using widely, we use that kind of medium in our education system. So English education emphasis. A structured education system established multi-tiered education, hierarchical administrative frameworks, organized schooling system. So in structured education system में हम क्या देख रहे हैं कि establish किया multi-tiered education, hierarchical administrative framework, organized schooling system को organize किया गया. Teacher training importance क्यों है? Because it highlights the needs for training. अब आप teacher training कर रहे हो, for example in B.Ed we are going to get trained by the teachers to become teacher, because we are right now pupil teacher. तो teacher training बहुत important है, because ये training की needs को highlight करती है, improve करती है teacher की quality को, and emphasize करती है education में. University की development के बारे में बात करी गई है Wood's Dispatch में. Okay, so in university development, foundation for major universities, influential higher education institutions. So it influenced higher education institutions. Established academic excellence. So this is related to university development, foundation for major universities, influential higher education institutions, established academic excellence. Vernacular language use. Vernacular is like your native language that you use in your daily life, जो आपकी बोलचाल की भाषा है. So it promotes local language instruction. If अगर आपको instructions देना है तो आप local language में दो, ये promote किया गया vernacular language use में. Balance with English, so you're balancing your own vernacular language, regional language with English, and enhances primary education accessibility. Primary education accessibility सबको दिया जाए, उस पे enhance किया गया vernacular language use पे. Female education initiatives लाया गया. So in female education initiatives, इसमें तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, because we have so many points. Early push for female literacy. तो earlier जो है इसमें push किया गया female के literacy के लिए, enhance किया गया gender education equality को. Okay, boys and girls both should go to school. Modern program for girls, जो girls है उसके लिए modern program लाया जाए, schemes लेके आया जाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. This is a kind of scheme that you can include in female education initiatives. This is all about Wood's Dispatch. अब आप एक conclusion देके इसे bind कर दो. So Wood's Dispatch laid a foundation that continues to influence contemporary Indian education. तो Wood's Dispatch भी अभी के टाइम में continue किया गया है to influence contemporary education, जो अभी के टाइम में चल रही है education, striking a balance between tradition and modern education needs. तो tradition plus modern education needs को ध्यान में रखते हुए, balance करते हुए, we are laying a foundation of this
in our contemporary Indian education system. This is about Wood's dispatch. Let me show it. Pause it and then read it. Impact, English education emphasis, structured educational system, teacher training importance, university development, vernacular language use, and female education initiatives. And then conclusion, done. Next come to program of action POA 1992. जैसा कि ये question शायद आ सकता है because it's very important. And first write the introduction about program of action. A comprehensive educational reform. So program of action is comprehensive education reforms happened in 1992. This policy document reform policy document formulated in 1992 as program of action POA to operationalize the National Policy on Education 1986 NPE 1986 and its modification in 1992. So NPE 1986 जो है इसके modification की बात करी गई थी 1992 में with the help of program of action. So in introduction, you'll write a comprehensive education reform policy formulated in 1992 as program of action to operationalize the National Policy on Education 1986 and its modification in 1992. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा flow chart बनाया है. You can write segment of POA and then you can write these segments. ठीक है? आपके segments के बारे में भी पूछा जा सकता है. So segments are related to elementary education, secondary education, higher education. तीन easy है, elementary, primary, secondary and higher education. And then another is technical and vocational education, technology और vocational education से related. 4 points ऐसे ही हो गया segment पे. Fifth point is adult education, then teacher education, adult की education चाहिए, फिर teacher की education चाहिए, and then equity and social justice के बारे में बात कर रहे हो POA के segment में, and then you are talking about management and monitoring. So management important है और monitoring भी important है. This is about segment of POA. Now let's come to the next headline for program of action. Okay, you can just write about the segment of POA in the short notes. तो segment में elementary education, universalization of primary education, non-formal education होता है यहाँ पे. Secondary education में expansion होती है diversification की because India is a diversified country. So expansion of diversification, improvement of quality. Then higher education में autonomy and accountability. Higher education में हम क्या करते हैं? Autonomy की बात करते हैं और accountability की बात करते हैं. Then number 2 is research and development because in higher education we do PhD and all these things that we do for higher education level. So research and development, technical and vocational education, skill development, industry collaborations, practical skills we get from vocational training. Adult education, literacy campaigns, continuing education. Adult education में literacy campaign करते हैं, फिर education continue किया जाता है. So adults continue their education. So I've just mentioned 5 points, 5 segment only of POA because short notes में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है. Then let's come to the impact of POA. So impact क्या पड़ता है POA का? Program of action का impact क्या था? Increased access to education. Enhanced educational quality. So POA increased access to education. Education का access बढ़ गया. Education quality enhance हो गई. Skill development हो गया. Equity and inclusivity आ गई. Teacher की development हुई. Decentralized management हो गया. When you are decentralizing something तो आपकी जो power है वो बढ़ जाती है. But when you are centralizing something तो एक के हाथ में ज़्यादा power आ जाएगा. That is not good. So in education system, impact of program of action was increased access to education, enhanced education quality, skill development, equity and inclusivity, teacher development, decentralized management. This is all about POA, and then you will conclude your point by writing that POA 1992 transformed India's education system with initiatives for universal access, improved quality, skill development, equity and decentralized management, marking a pivotal step towards inclusive and effective education nationwide. अब सी एक बहुत कॉमन सी चीज है, जो भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं या लॉन्ग आंसर 16 मार्कर क्वेश्चंस है, just try to write in essay format, introduction, body and conclusion. ये बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे आपको. एंड देन राइट सम फ्लो चार्ट. अगर आप प्रिंसिपल लिख रहे हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, देन सर्कल इट राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन फॉर्म
4 or 5 arrows and then write all the points there. इससे बहुत ही इफेक्टिव लगेगा आपका आंसर. एंड कंक्लूजन में हम जो इंट्रो और बॉडी में लिखते हैं उसी को कंक्लूड करके समरी बना करके हम कंक्लूजन में डालते हैं. बहुत किसी को कंक्लूजन में डाउट होता है, बट यू कैन राइट इन दिस वे ओनली. इट इज इजी. Let me show this program of action to you. A comprehensive education reforms policy document. All right, let me not read it. Read yourself. Done? मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि आपको 1.5 पेज में ही आंसर लिखने हैं. और शॉर्ट मैंने बहुत ही छोटा छोटा आंसर लिखा है बिकॉज इजी टू रीड है. इन्विजिलेटर विल ऑल्सो थिंक दैट यू नो द आंसर बट यू आर चूजिंग वेरी शॉर्ट आंसर्स. एनसीएफ 2005 लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है. फॉर शॉर्ट, एनसीएफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क. It was developed by educational experts and policy makers in India. Short introduction. Then write about NCF in 2005. I've given this bracket here. You can see. And I've written point this way. Published by NCERT, NCF National Curriculum Framework. किसने publish किया? NCERT ने. Officially किसने release किया? Ministry of Human Research and Development, Government of India के द्वारा. Purpose क्या है? So what are the purpose of NCF? To serve as a guideline for syllabus, textbooks, teaching practices for school in India. Number 4, it outlines the vision, goals, principles, and strategies for transforming the education system to meet the needs of learners in 21st century. Okay, so you are creating it and forming an outline to the vision, goals, principles, strategies for transforming the education system. Main आपका focus क्या है? Education system को transform करना. Why? To meet the needs of learners in 21st century. जो 21st century के जो learner हैं, उनकी जो need है, वो आप fulfill कर पाओ. Next is before NCF 2005 कितने बार ये हो चुका है already? 1975 में, 1988 में, 2000 में, and then recent one is 2005, NCF 2005. तो इससे पहले 3 बार आ चुका है already, 1975, 88 and 2000. Now I've just written this short answer for needs of NCF and the objectives of NCF. ठीक है, तो needs और objectives में आप क्या लिख सकते हो? Needs में आप लिखोगे modernize education system. So NCF ने education system को modernize करना चाहा है. It foster critical thinking. It promote holistic development, encourage creativity, ensure inclusivity, adapt to diverse social cultural contexts, create relevant and flexible curriculum. Very easy points, easy to remember. Read it 2 or 3 times, you will remember. Modernize education system, foster critical thinking, promote holistic development, encourage creativity, ensure inclusivity, adapt to diverse socio-cultural contexts, create relevant, flexible curriculum. Objective क्या है? So in objective, it is learner-centered approach. Learner के point of view से आप पढ़ा रहे हो. So learner-centered approach में बात की जा रही है NCF की. Emphasize values education. आपके education से आपको value क्या मिल रहा है, उस पर ज़्यादा focus है. It develops 21st century skills. 21st century के skills को develop किया जा रहा है because you're aiming for meeting the needs of 21st century students. Should be well integrated, enhance teacher empowerment, teacher के empowerment को enhance करना. Advocate for flexible and relevant curriculum. आप flexible और relevant curriculum को दे रहे हो, ध्यान में रख रहे हो. It promotes social justice. Social justice promote किया जा रहा है, democratic value and national integration also. So needs and objectives में needs, modernize education system, foster critical thinking, promote holistic development, encourage creativity, ensure inclusivity, adapt to diverse socio-cultural contexts, create relevant and flexible curriculum. Objective, learner-centered approach, emphasize values education, develop 21st century skills, should be well integrated, enhance teacher empowerment, advocate for flexible and relevant curriculum, promote social justice and democratic value and national integration. NCF बहुत important है, so try to remember this wholeheartedly because ये तो आना ही आना है. Maybe short notes में, maybe 16 marker में. Curricular areas, school stages and assessments. So curricular areas क्या है, school stages क्या है, assessments क्या है. So traditional एक हो गया और एक other areas हो गया. तो traditional areas में we see mathematics, science, social science and language. And other areas में art education आता है, education for peace, work and education, etc. So this is about circular areas, school stage and assessment. मैं इसको आपको जब long answer 16 marker वाला कराऊंगी
Then I'll show you in detail about NCF. यहाँ पे short notes में है. So NCF serves as a road map. आप एक road map की तरह use कर रहे हो NCF को. NCF serve करता है for educational reforms. Education में reforms लाने के लिए guiding curriculum development. ये guiding, ये क्या guide कर रहा है? Curricular development को guide कर रहा है. Teaching practices, assessment strategies, and aims to empower learners to become active and informed citizens. तो NCF का काम है कि आप जो learner को पढ़ा रहे हो, it could be like it is to empower learners so that they can become active learner and informed citizens. This is all about NCF 2005. See this. This I've written it for introduction and few important points of NCF. Then about NCF and needs and objectives. And circular areas, school stages and assessments in traditional and other areas. And conclusion. Done. Next topic is NPE 1986. So what is NPE 1986? New education policy. New education policy 1986 क्या provide करती है? It represented a significant revision and expansion of educational goals. यहाँ पे आप significant revision और expansion की बात कर रहे हो education goals से related and strategies outlined in 1968 policies. So strategies किसमें outline की गई है? 1968 policies. तो ये 1968 के बाद 1986 में reform हो के आया है. So it represented a significant revision and expansion of educational goals and strategies which is outlined in 1968 policy. So it is implemented through measures such as universalization of secondary education. It's not elementary, it's secondary education, universalization of secondary education, expansion of vocational education, strengthening educational planning, administration, promotion of values-based education, and integration of Indian culture and heritage in education. अभी हमने ऊपर वाले आंसर में देखा था कि we were talking about value education, ठीक है, value based education, vocational training. तो आप ये सारी चीजें एनपी में लिख सकते हो. Pause it and read from here. I'm not gonna show you again. यहाँ पे आप देख लो. Principle of NPE 1986 principles क्या है? Equity की बात करती है. Equity, quality and relevance और efficiency. तो NPE की principle क्या है? Equity, quality, relevance, efficiency. Equity क्या हो गया? Ensures equal access and opportunities for all. Quality, focus on improving standard of education. Standards of education की बात कर रहे हो, quality लाने की. Relevance क्या है? Make education more practical and relevant. अब अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू योर वर्क कल्चर, प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा कुछ आपको, देन इट विल हैम्पर योर वर्क और यू विल नॉट गेट द जॉब इजीली. एफिशिएंसी में बात करें तो इट ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव एजुकेशन. सो ऑप्टिमाइज करती है रिसोर्सेज को इफेक्टिव एजुकेशन. एफिशिएंसी कितने इफिशिएंटली हो करके किया जा रहा है एजुकेशन. Equity, quality, relevance, and efficiency all are the principles of NPE 1986. Now see characteristics and provisions of NPE 1986. तो characteristics and provisions मैंने डाल दिया. अगर आपको कुछ भी याद है तो आप वो लिख सकते हो. If you remember 4 points also, then write it and write one line of explanation, or you can leave it also because short answer है. Characteristics में universal elementary education UEE, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन, करिकुलम फ्री फॉर्म, टीचर डेवलपमेंट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. देन प्रोविजंस ऑफ एनपी 1986 में क्या होगा? प्रोविजंस यूनिवर्सल एक्सेस, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन, टीचर ट्रेनिंग, एस्टैब्लिश्ड DIETs फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स. ठीक है. सो प्रोविजंस ऑफ एनपी 1986, यूनिवर्सल एक्सेस, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, curriculum flexibility and adaptation, teacher training, established DIETs for improving quality and effective teachers. Almost same characteristics of provisions, but a slight difference in words and the way of writing. Evolution क्या है? See, evolution and conclusion, your answer is done of NPE for short answer. Evolution कैसे हुआ था? Starting में ये 1964 में Education Commission के through आई थी, 1964 to 66. Education Commission is nothing but कोठारी Commission. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 पहले आई, देन 1968 के बाद 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड देन 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एंड लेटर 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज. Okay, I think I've written wrong. I think it should be new education policy, I guess. Okay, just check it. In conclusion, NP 1986 aimed to revolutionize the educational landscape in India by focusing on universalizing elementary education, vocational education, etc. Overall, it laid the foundation for a more inclusive,
relevant and quality oriented education system in India. This is about conclusion. Aim to revolutionize the educational landscape in India by fostering on universalized elementary education, UEE, vocational education, etc. Overall, it laid the foundation for a more inclusive, relevant and quality oriented education system in India. Almost आप ये notice कर रहे होगे कि जितने भी education commission system है उसमें ये inclusivity, relevancy, relevant, quality oriented education, value education, ये सारे points सब में similar है. Now, Secondary Education Commission 1952 to 53. इसमें Secondary Education Commission 1952 to 53 क्या है? It's chaired by Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar. It was established by Government of India to evaluate and reform the Secondary Education Commission, aiming to make it more relevant and comprehensive and student-centered. ठीक है? Aim क्या था? ज़्यादा relevant बनाना है, comprehensive बनाना है और student-centered, learner-centered approach होना चाहिए. तो SEC का भी यही है. इसको chair कौन किए गए हैं? Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, which was established by Government of India to evaluate and reform Secondary Education Commission. तो इसको evaluate और reform करने के लिए लाया गया है, aiming to make it more relevant, comprehensive and centered education, student-centered education. Established in 1952 and reported in 1953. तो establish कब किया गया? 1952 में, report किया गया 1953 में. Purpose क्या है? To evaluate and improve secondary education system. तो इसमें क्या evaluate करने के लिए? Evaluate and improve or reform the secondary education system to suggest reforms for making secondary education system more relevant and effective. Same definition की जैसा ही है, but आप इसको purpose में डाल करके लिख सकते हो. Principles में क्या दोगे Secondary Education Commission में 1952 to 53? Education should be child-centered, emphasis on developing democratic citizenship, focus on the overall development of students. The principles: child-centered, developing democratic citizenship, overall development of students. Characteristics में क्या डाल रहे हो? Diversified curriculum, examination reforms, teacher improvement, facilities and infrastructures, guidelines and counseling. ठीक है? The diversified curriculum में introduce a variety of subjects including vocational and technical education. Diversified means diverse kind of curriculum. एक से ज़्यादा subjects आपको include किया गया है. Traditional subjects के साथ other areas भी हैं. So introduce a variety of subjects including vocational plus technical education. Examination reforms, continuous and comprehensive evaluation, CCE, instead of terminal exams. तो terminal exams की जगह पे continuous and comprehensive evaluation, जैसे आप देखते हो formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, ये सारा examination में change लाया गया है. Teacher improvement के लिए better training और professional development, और facilities and infrastructures के लिए improve school facilities, libraries and laboratories. Guidance and counseling, ठीक है? आपको guidance और counseling की जरूरत पड़ती है students को. That will make them more confident and self-oriented. Impact में आप क्या लिखोगे? Now let me show this impact. Impact में मैंने ऐसे करके डाला है because the space was very less for short answer. So in impact you can write about curriculum diversification, already written there. Examination reforms, teacher training, improved infrastructure, guidance service. Same type आपका impact में भी आएगा जो हमने यहाँ पे characteristics में देखा है. ठीक है? Impact में कैसे पढ़ रहा है? Broader subject choices and inclusion of vocational training. आपको choices बहुत ज्यादा मिल रही है, broad कर दिया गया है, तो curriculum का diversification हो गया. जो आपके subject choose करने के options थे वो अब बढ़ गए हैं. तो broader subject की choices हो गई हैं. Inclusion of vocational training भी आ चुका है. Examination reforms जो है shift कर दिया गया है towards continuous assessment, that is towards CCE. Teacher training जो enhance किया गया है teacher training program को. गाइडेंस सर्विसेज में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स. ठीक है? अभी हमने देखा गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो इन दिस स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ ओरिएंटेड एंड कॉन्फिडेंट विद देयर सब्जेक्ट्स. इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेड फैसिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल्स. सो सेकेंडरी स्कूल्स में जो है फैसिलिटीज को अपग्रेड कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया है, दैट मीन्स फंडिंग अच्छी हो गई है. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म्ड सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है? इसने क्या रिफॉर्म किया? सेकेंडरी एजुकेशन, making it more comprehensive, practical, student-centered. It laid the foundation for future education policies. Future में जो जाके education policies है उसको लेकर के इन्होंने foundation laid किया and contributed to the development of more holistic education system in India. Like more holistic approach follow करना चाहिए, जिसमें already you can see that curriculum diversification, teacher training, guidance service, examination reforms and improved infrastructure, ये सारा include किया गया है. Next is Ramamurthi Commission 1990.
सो रामामूर्ति कमीशन 1990 में क्या है, इट वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये अपॉइंट किया गया था ताकि रिव्यू किया जाए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एनपीई के ऊपर रिव्यू करना था रामामूर्ति कमीशन को। दिस कमीशन वाज सिमिलर और अकीन to the Kothari Commission of 1964 to 66 and NPE 2020, NEP 2020। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है रामामूर्ति कमीशन 1990, 1964 के कोठारी कमीशन और NEP 2020 के सिमिलर है। और ये क्यों अपॉइंट किया गया था, ताकि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर रिव्यू किया जाए। एजुकेशनल रिफॉर्म टास्क फोर्स लाइटिंग सिमिलर टू नेशनल education policy 2020, it was aimed at improving educational standards and relevance। ऑलमोस्ट यू कैन सी द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और जितने भी हमने देखे हैं अभी, वो सबके सब वैल्यू एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, रेलेवेंस लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिविटी लाने की बात कर रहे हैं। सो दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स दैट कैन यूज लाइक ऑल टुगेदर, बट स्टिल वुड प्रेफर कि आप इसे 2-3 बार सुने, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले तो 5-6 बार सुन के जाए, इट वुड बी इजी। इट वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति। आचार्य रामामूर्ति के अंडर में इसको किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस क्या था, टू असेस एंड रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर एजुकेशन पॉलिसीज। एसेस किया जाने की बात की गई और रिकमेंड करने की बात करी गई कि क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वो रिकमेंडेशन में दिया जाए फॉर एजुकेशन पॉलिसीज। एम्फेसिस ऑन रेलेवेंस एंड रेलेवेंस टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो पर्पस क्या था, टू असेस एंड रिकमेंड, असेस करो और रिकमेंड करो रिफॉर्म्स फॉर एजुकेशन पॉलिसीज। एम्फेसिस करो रेलेवेंस पे टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। गोल तो आपका नेशनल होना चाहिए कि यू आर फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सो एम्फेसिस ऑन रेलेवेंस टू द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। प्रिंसिपल क्या है, एजुकेशन एज ए टूल फॉर नेशनल ग्रोथ। नेशनल ग्रोथ के लिए आप एजुकेशन को एज ए टूल यूज कर रहे हो, किसमें, तो रामामूर्ति कमीशन में 1990। फोकस ऑन क्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख सकते हो, सेम। करिकुलम रिवीजन, करिकुलम को रिवाइज किया गया, सिलेबस रिवाइज किया गया, बिकॉज सिलेबस आउटडेटेड होगा तो अपडेट किया गया। अपडेटेड टू मीट कंटेम्प्रेरी नीड्स, अभी के टाइम में जितने भी नीड्स है उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए अपडेट किया गया करिकुलम को। टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया, इम्प्रूव प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होगी तो टीचर्स अच्छे आएंगे स्कूल्स पे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया जिससे आपको आगे जा करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प मिले, और वैसे प्रोग्राम्स को ऐड किया गया। द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, तो आप एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करिकुलम एनहांसमेंट होगा, टीचर की क्वालिटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगा। तो करिकुलम एनहांसमेंट में मॉडर्नाइज टू अलाइन विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेम करिकुलम एनहांसमेंट हो रहा है तो ये अलाइन करना चाह रहा है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के पैरेलली। So modernize to align with national objectives. Teacher quality improved through better training, and with well qualified teachers should be there with certification from good renowned universities or institution. Technological integration में आप integrate कर रहे हो, like integrate means कि आप include कर रहे हो technology related चीजों को। Enhance education delivery, अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, I'm using Zoom application for teaching you, and it's going to be on YouTube. So it's online education, right? So you're using technology, you're integrating technology in your education system. So in conclusion, you could write that Ramamurthy Commission played a crucial role in shaping educational policies to meet India's developmental aspirations, emphasizing quality, relevance and technological advancement in education. ठीक है, यहाँ पे technological advancement को include करने की बात की गई है, emphasize की गई है quality, relevance और technology के ऊपर। Now इसमें एक last topic है Sargent Report 1994, ठीक है। So this, it's not last topic, but in unit 3 we have 2 more topic जो कि मैं next video में कराऊंगी, SSA and mid day meal, MDM and सर्व शिक्षा अभियान। अभी मैं Sargent Report करा के I'll end this topic. Contribution of it in Indian system of education. So Sargent Report 1994 क्या बोल रही है, it contribute like the contribution of Sargent Report in Indian education system. Sargent Report 1994 is commissioned by British Government of India. So Sargent Report जो है वो commission किया गया है British Government of India के द्वारा 1994 में। इसकी purpose क्या थी? To assess and propose
improvements for Indian education. ये SS और propose कर रही है improvement और Indian education. Recommendations क्या थे सर्जन रिपोर्ट्स के? यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करो, फ्री एंड कंपलसरी और प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स को. सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करो, यूनिवर्सल एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन टू इंक्लूड अ डाइवर्सिफाइड करिकुलम. देन हायर एजुकेशन में सजेस्टेड एक्सपेंशन. हायर एजुकेशन में क्या सजेस्ट किया गया? एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट विद अ फोकस ऑन रिसर्च. हायर एजुकेशन में आप रिसर्च पे फोकस करते हो, एक्सपेंशन पे और इम्प्रूवमेंट पे. स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या है? प्री प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रक्चरल चेंज में, प्री प्राइमरी मीन्स नर्सरी स्कूल्स 3 to 6 years. बेसिक एजुकेशन इंक्लूड प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग में टू एनहांस एजुकेशनल क्वालिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्टेड अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज आप स्कूल में जाते हो तो देखते हो कि देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाद टीचर डिपार्टमेंट अलग है, लैब अलग है, तो हर चीज जो है डिवाइडेड है. दैट इज डिसेंट्रलाइज. आपने सेंट्रल चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर डिवाइड हो गया. तो इससे क्या होगा? आपका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा. एजुकेशनल फाइनेंस शुड इंक्रीज फंडिंग. तो एजुकेशन से रिलेटेड फाइनेंस मिलनी चाहिए, फंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ साइड से जो है फंडिंग आपका इंक्रीज होना चाहिए, ताकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले. ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो, टीचर्स अच्छे हो. क्रिटिसिज्म क्या है? दैट इम्प्लीमेंटेशन डिलेज. इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो डिले होती है. इम्प्लीमेंट पॉलिसी मेकिंग तो हो जाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसी बनाने वाले के बाद वो डिले होता है. कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट अभी भी लाइक प्रेजेंट है. कंक्लूजन में लिखोगे द सर्जन रिपोर्ट 1994 played a pivotal role in shaping the educational landscapes of India by laying down a comprehensive framework for universal education, emphasizing importance of both academic and vocational training and advocating for significant administrative and financial reforms. The Surgeon Report 1994 क्या कर रहा है? It played a pivotal role in shaping the educational landscape of India by laying down a comprehensive framework for universal education, emphasizing importance of both academic, vocational training, and advocating for significant administrative and financial reforms. This is all about Surgeon Report. Then Unit 3 we will do tomorrow. So Unit 2 के कुछ और topics हैं, and I'll cover first Unit 2 के topics में पहले complete कराऊंगी दो जो बच रहे हैं, मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान. And after doing that, we'll come to Unit number 3 and Unit number 4. So I will cover Unit number 3 and 4 also. अगर आपको ये सही लग रहा है and you are feeling that okay, this is going to be helpful in your examination, which is going to be on 28th of June. So let me know in the comment sections. I'll make another more notes for you. And all the notes are in handwritten formats. If you want notes, अगर आपको notes चाहिए, comment down. And I'll share my Telegram ID or my email ID. So from there, you can purchase the notes. All right. Thank you. We'll see you soon in the next video. Bye-bye. Take care.